Hi guys, once again welcome back to my YouTube channel Medicare Buddy. Once again I welcome all of you back to this session in which we are going to discuss an extremely important topic of practice of medicine today, which is a part of 25 days 25 topic practice of medicine series, and today's topic is osteomalacia. Now what is osteomalacia? Definition की बात करें तो osteo का मतलब होता है bone and malacia का मतलब होता है softening. So bones की जो softening होने लगती है due to the defect of the mineralization, then we call this osteomalacia. What is it written here? Defect mineralization of the bones due to insufficient vitamin D causing softening of the bone is known as osteomalacia. So this happens mostly due to the deficiency or insufficiency of vitamin D. Now etiology की बात करें तो विटामिन डी जो है that is responsible for calcium and phosphate absorption. बट जब विटामिन डी की डेफिशिएंसी डेफिशिएंसी हो जाएगी, सो बोन डेंसिटी भी कम हो जाएगी, बोन टर्नओवर कम हो जाता है, एंड एज अ रिजल्ट बोन स्टार्ट्स गेटिंग सॉफ्ट. सो बोथ ऑफ दीज कंट्रीब्यूट्स टू बोन सॉफ्टनिंग. ओके, एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्लिनिकल फीचर्स. सो क्लिनिकल फीचर्स में बोन्स में पेन मिलेगा. ओके, नाउ फ्रैक्चर्स, अब नॉर्मल जगह पर फ्रैक्चर्स होने लगते हैं बिकॉज वाई सो, क्योंकि नॉर्मली जो फ्रैक्चर साइट्स होती है दे आर मतलब कॉमन फ्रैक्चर साइट्स आर देयर, बट अब नॉर्मल जगह के से फ्रैक्चर हो जा रहा है विच मीन्स द बोन्स आर अल्ट्रा सॉफ्ट. So due to that it occurs, then muscle weakness and fatigue can also be observed. Now investigation के लिए you can go for X-ray, आप DEXA scan करवा सकते हो for चेकिंग आउट फॉर ऑस्टियोमेलेशिया. आप सीरम कैल्शियम और फॉस्फेट का लेवल चेक कर सकते हो, और वो दोनों अगर आपको रिड्यूस्ड मिले देन ऑब्वियसली दिस इज अ केस ऑफ ऑस्टियोमेलेशिया, व्हिच आल्सो सिग्निफाइज दैट विटामिन डी इज डेफिशिएंट. ओके, पैराथॉर्मोन अगर बढ़ा हुआ मिल रहा है, पैराथायराइड हार्मोन, तो ऑब्वियसली पैराथायराइड हार्मोन कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द कैल्शियम जो भी होम्योस्टैसिस होती है उसके लिए, एंड दैट इज हाउ this can be investigated. Now 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी के लिए भी आप टेस्ट करा सकते हो और देख सकते हो कि उसका लेवल कम है या ज्यादा. ट्रीटमेंट की बात करें तो विटामिन डी के सप्लीमेंट्स, बिकॉज ऑब्वियसली व्हेन यू लुक एट दिस पैथोजेनेसिस का चार्ट, तो इसमें क्या दिक्कत आई? विटामिन डी ही तो कम था. विटामिन डी वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट, एंड व्हेन दिस इज नॉट प्रेजेंट, दिस इज कॉजिंग डिक्रीज इन द बोन डेंसिटी, द बोन टर्नओवर, and which in return causes osteomalacia and bone softening. So when vitamin D को आप जगह पर ले आओगे, when you'll cause its management, when you'll cause take supplements for that, obviously this condition is in the long run going to improve. So yeah, that's it about today's session. I hope ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल था. अगर पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और बैचमेट्स के साथ शेयर कीजिएगा, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन हैप्पी लर्निंग.